समस्त को मोर जय जीशु। मो ना हूँ जेनिस छाटिया, मो पारिश हूँ गदापुर, मो गाँ हूँ सुलुमा। आमे कटक भुवनेश्वर डायसेस रु आसी अच्छु ए अनुग्रह पीठ को। ए अनुग्रह पीठ रे आमे अनेक आशा आकांक्षा नहीं आसी अच्छु। गत 2019 साल जनवरी मास 22 तारीख दिन आमर जाजक अभिषेक होता से आमे पूर्ण भाव रे जोग देवा पाए जाउथिलु। सेथिरे गाड़ी एक्सीडेंट हेबारु आमे अचेत होई पड़ी गलु। कारण प्रभु आम समस्त को तांकोरी दया तांकोरी प्रेम रे आम समस्त को से बंचे रखी अछंती। तेणु आज यही मोहनार अनुग्रह पीठ रे आमे प्रथम थर पाई आसु अछु। यही अनुग्रह पीठ रे आमे यथेष्ट भाव रे अनुग्रह प्राप्त होई तांको धन्यवाद देवा सकाशे ए स्थान रे आमे उपस्थित होई अछु। ए अनुग्रह पीठटी आम समस्त को आनंद देउछि, उत्साह दउछि, विश्वास रे अभिवृद्धि हेबा पाई किछि आमे प्रेरणा मध्य पाउ अछु। तेणु आमे समस्ते प्रभुंको पाखरे भरोसा विश्वास रखी ए अनुग्रह पीठ स्थान को आज पहुंची अछु। कमल छाटिया सुलुमा गाँव रु आसी मोर पारिश हूँ गदापुर। गत वर्ष एक्सीडेंट थी। एक्सीडेंट बादरे मोर जीवन थी मुझे धन्यवाद देवाई प्रभु निकट में आसी कौन कहीपर धन्यवाद। मो ना शेरसारता छाटिया सुलुमा पारिश रही आम गदापुर पारिश। मु गला वर्ष मु एक्सीडेंट ए प्रकार अवस्था थी। वर्तमान मोहना पारिश को अनुग्रह पीठ को आसिक मो भल सुस्थ सबल होगापी धन्यवाद देवा अनुग्रह आशीर्वाद मांगवाई आई। और नमस्कार। प्रथम मोर जय जीशु। मो गदापुर पारिश रो बुझली आमर गाँ भी ग्राम बुझली पारिश गदापुर निर्मला बलार सिंह गला 19 साल रे जो एक्सीडेंट होइतिलु मु भी सेठी थिली। आज अनुग्रह द्वारा प्रभुंकर आशीर्वाद द्वारा आमे सुस्थ लाभ करिकी आज अनुग्रह पावा पाई आमे आसी अछि। समस्त को मो तरफ नमस्कार। यीशु ख्रीष्ट नाम रे आमे समस्ते स्थान को आसी अच्छु। आमे सुस्थ भी पहुंची सारे। तेणु प्रभु को बहुत धन्यवाद दे दीपद कह चाहे ये अनुग्रह पीठ विषय रे। डियर फ्रेंड्स, द अनुग्रह पीठ of Mohana is famous. It is famous because people are coming from different places to pray here and get God's grace. It is my experience that I have been hearing and I have been remembering Anugrah Pita statue and pray. Whenever I pray, I get lot of inspiration to do for my family. And today I have come here with my family and my relatives. This is my wife and this is my daughter. My daughter is suffering from spinal atrophy. She is suffering since 18 months and we have been praying and we have been getting slowly, we have been seeing slowly changes in her healing. And I hope that and I believe that by the grace of God and by the and through praying of Father Chintamani, I believe that my daughter will be 100% cured. And dear friends, as you see that here all are gathering here, that last year
22nd of January, these people suffered a lot due to accident. They were coming from Suluma village to Bhavaniga parish for ordination, but due to some evil people, the accident was taken place. It is well planned due to some RSS people, but these people were saved due to Christ and through the intercession of Mother Mary. She was in ICU. He was also in critical situation. She was in ICU. She was also in Barampur MKCG Medical College, and these people really suffered. Friends, what can I say to you all? It is nothing else but miracle of God. By the power of prayer, these people are now seeing the God's day. And I myself, Anand Kumar, would witness to you all that it is nothing else, it is God's grace. Due to God's grace, these people and we all are suffering. And you, friend, please believe that the people, those who are coming from different places to this Anugrah Pitha, that people really heal, they get really God's grace. Please come from different places to Anugrah Pitha to pray and get God's grace. Thank you very much.